Okay, hi everyone. So welcome to another session. In this, we are going to discuss about increment and decrement operators and these three remaining operators. So what is incrementing and decrementing? So whenever you are going to do some operations in JavaScript, and if you want to increase your current value of your variable by one, so you can use plus plus operator. Okay, then you can use minus minus. Okay, so this plus plus will increase your variable value by one, and minus minus will increase the value by uh, one. So let's say in JavaScript, okay, not here actually. This is your HTML file. I wanted to work in this file. Okay, so we saw arithmetic operators, assignment operators, string operator. Now if you go here, incrementing or decrementing operator. So these are the operators for the plus plus comma minus minus. Now how to use these operators with the JavaScript? First of all, let's define the new JavaScript variable, that is integer a is equal to 10. Okay, not integer. In JavaScript we can use var keyword for declaring the variable. Okay, so I have declared one a variable. Let's declare it as num. Okay, it has 10. We have another variable called num2. Okay, has 20 value. Got it? Now I wanted to increase the value of this 10 by 1. Okay, so if I do like this, console.log, okay, and num plus plus. So this plus plus operator you can use like this. So what it will do, it will increase the value of your num variable by 1, so it will become 11. Okay, and then it will show here, but it will not display here. If you want to display the 11, you have to increase that value first like this, and then you have to display that in the console like this. Okay, so what will happen, it will just increase the 10 by 1, it will become 11, and then 11 number you will print in the console. Okay, and same if you print like this console, let me just print the proper name here as well, like num is equal to num1 is equal to num1. Okay, this is your number one, and that number one having increment value, incremental operator. Okay, so now if you see this output in the console, let me run that. To see the output, you have to run the Java HTML file. Okay, just run it, go to the console. This is the console. Here you can see num1 is equal to 11. Okay, so by using the plus plus operator, it will increase the value of current variable by 1. Okay, and also there is one more thing. So this is, if you print this like, if you just print like this time, console equal to num2. Okay, and here I am not going to print, I am just going to print num2. So what will happen? It will just print 20 as it is. Okay, let's see. Just refresh this page and see the console. Num1 has 11, num2 has 20. Now instead of printing like this, I'm printing num2 plus plus. Okay, what will happen? So the our expectation is num2 plus plus will increase the value by 1 and then display in the console, right? But it will not like that. It will only display the same output. See, num1 having 11, num2 having 20. So in this case, यहाँ पे क्या हो रहा है कि even though you are doing the plus plus operator, it is first of all printing the value of num2 in the console, and then it is incrementing that value. It means अगर आपने फिर से num2 को प्रिंट किया है यहाँ पे विदाउट प्लस प्लस, तो क्या होगा, पहली बार वो 20 प्रिंट करेगा, फिर प्रिंट करने के बाद उसको एक वैल्यू उसमें बढ़ाएगा, सो इट विल बिकम 21, एंड देन अगर आप फिर से num2 को प्रिंट करोगे आपको 21 दिखेगा. ओके, नाउ यू कैन सी, नोटिस द कंसोल. ये num1 है, दैट इज इंक्रीमेंटेड. यहाँ पे क्या होगा, नम को पहले प्रिंट किया, देन इट इंक्रीज बाय 1,
एंड लेटर हमने क्या किया, उस num2 को फिर से प्रिंट किया तो दिखा कि हाँ यस इट हैज इंक्रीमेंटेड वैल्यू। ओके, तो कैसा रहता है कि अगर you are using this plus plus operator while displaying or while using this variable, then it will not use the newly generated value. It will only use the current value while printing it. Later it will increase the value, and once it is incremented you can use that value later in the program but not on the same line. ऐसा भी हो सकता है कि I don't want to print the 20 here. Okay, I want to increase the value first and then उसको प्रिंट करना है, उल्टा करना है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, ये मैंने कमेंट कर दिया और जस्ट लेट मी रिमूव। इन दैट केस क्या कर सकते हो, ये जो प्लस प्लस है ये ऑपरेटर आपको पहले लगाना है यहाँ पे, ऐसा। तो क्या हो जाएगा, num2 प्लस इक्वल टू प्लस प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वो वैल्यू इंक्रीज करेगा, जो वैल्यू आएगा उसको फिर प्रिंट करेगा। तो आउटपुट शुड बी दिस टाइम 1 जो है वो यहाँ पे 11 दिखेगा, 2 जो है वो यहाँ पे 21 दिखना चाहिए। सो लेट्स रिफ्रेश, सी num1 इज इक्वल टू 11, num2 इज इक्वल टू 21। सो हमने क्या किया था num1 के केस में, उसको इंक्रीमेंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन बढ़ाया, num1 प्लस प्लस, फिर वो इंक्रीज हो गया, फिर हमने प्रिंट किया। दो लाइन का आउटपुट हम एक ही लाइन में ला सकते हैं। कैसे लाया, बस जिस प्लस प्लस को num2 के बाद में नहीं लगाना है, उसके आगे लगाना है। इससे क्या हो जाएगा, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एंड देन प्रिंट इट। अगर भी बाद में लगाओगे तो इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल एंड लेटर इट विल इंक्रीज दैट वैल्यू। इट मीन्स फॉर दिस लाइन देयर इज नो नो अफेक्ट ऑफ द न्यू वैल्यू। ओके, नया वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखेगा इस लाइन पे अगर आपने बाद में लगाया तो। सो दिस इज योर प्लस प्लस। माइनस माइनस ऑपरेटर क्या होता है, इट विल जस्ट रिड्यूस द वैल्यू बाय 1, इट इज सेम लाइक प्लस प्लस। ओके, अगर आप ऐसे माइनस माइनस करोगे, इट वाज हैविंग इनिशियल वैल्यू 10 20, then it will become 9 and this will become 19. You can see in the console, see num1 has 9, num2 has 19. So this is how we can basically make use of the plus plus operator and minus minus operator. Just notice the placement of that operator. If you are using that operator before your number, it will change the value first and then print it. Okay, if you are using that after the variable, then it will print the value first and later change it. Okay, and where you can use this one mostly, we can use that in for loop. Okay, you might saw that, right? I is equal to 1, I less than 10, I plus plus. It means increase the I variable by one value. Okay, next operator है लॉजिकल ऑपरेटर। अभी लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं देखो, लॉजिकल ऑपरेटर है ग्रेटर देन, लेस देन, सॉरी दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल यानी डबल एंड, डबल और एंड नॉट। तो दीज आर योर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, अभी डबल एंड, डबल और एक कब लिखते हैं, देखो सिंपल एक ट्रूथ टेबल है जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में है या फिर डॉट नेट में है। ओके, इंजीनियरिंग की सिलेबस में भी रहता है, सिंपल एक टेबल रहता है। ओके, सो आई विल जस्ट ऐड मल्टी लाइन कमेंट हियर, हियर वी विल ऐड दैट। तो ट्रूथ टेबल यानी अगर आप लॉजिकल एंड लिखते हो, ओके, लॉजिकल एंड, तो इसमें एक ट्रूथ टेबल ऐसा रहता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, ओके, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, देन इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, दिस इज योर लॉजिकल एंड। ओके, you already know this. Okay, it is very straightforward. लॉजिकल एंड यानी क्या, दो अलग अलग कंडीशंस हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इन अ सेम स्टेटमेंट। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, देन
only it will be become true. अगर दोनों में से एक भी false है या फिर दोनों ही false है, it will be a false. This is your logical and, double and. Now this is logical or. Okay, I will show you that as well. तो लॉजिकल और क्या होता है? और इसमें ऐसा रहता है कि अगर पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, इट इज ट्रू. अगर पहला ट्रू है, दूसरा वो चेक भी नहीं करेगा, सीधा ट्रू दे देगा. ओके. अगर पहला फॉल्स है, देन इट विल गो एंड चेक सेकंड कंडीशन, एंड इफ इट इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू. अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, देन इट विल रिटर्न फॉल्स. सो दिस इज योर लॉजिकल और. ओके, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और. अरे नॉट सिंबल क्या रहता है कि अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा. ओके, रिवर्स ऑपरेशन करने का काम करता है. ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर. अभी अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझने, उसके पहले आपको कंपैरिजन ऑपरेटर समझने होंगे, तभी जाके आप कंडीशंस बिल्ड कर सकते हो. तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर आते हैं देखो. ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, equal to, equal to. So these are your comparison operators. Okay, you can compare two operands whether they are having same value, whether they are having not same value, whether they are having greater than, less than values. So these operators will help you to compare the value of two different operands, and then accordingly you can decide your code, which code need to be write as per the current condition. Triple equal to भी एक रहता है. Okay, in JavaScript only. So यहाँ पे let's discuss about comparison operator. Now let's say in my code I am having two variables where a is equal to 10 and where b is equal to 20. Okay. Now console dot log. I just wanted to see whether both variable having same value. Okay. तो ये जो दोनों वेरिएबल्स है, इन दोनों में सेम वैल्यू है या नहीं. So by using this equal to operator, you can just compare that value. Okay. Now I'm just going to refresh this. See, it is returning false. Why? Because A has a 10, B has a 20. It means दोनों में same value नहीं है. That is your equal to operator. ये वाला. Now I'm going to discuss about not equal to. अगर दोनों में same value नहीं है तो return true, otherwise false. Refresh करो. ओके. तो ये नॉट इक्वल टू का एग्जैक्ट रिवर्स ऑपरेशन. अगर दोनों में सेम वैल्यू नहीं है देन ट्रू दे, अदरवाइज फॉल्स दो. मान लो अभी दोनों में सेम वैल्यू है, ए में भी 10 है, बी में भी 10 है. सो इन दैट केस रिफ्रेश करो, यहाँ पे फॉल्स दे रहा है क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि भाई ए में और बी में सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन दिस केस ये सेम वैल्यू है, इसलिए फॉल दे रहा है. लेकिन अगर आप यहाँ पे इक्वल टू यूज करोगे और अभी चेक करोगे, अभी ये ट्रू देगा. क्यों ट्रू दे रहा है? बिकॉज both variables are having same value and you are using equal to operators. Equal to यानी it will check whether both the variables are having same value or not. Okay. एक ट्रिपल इक्वल टू करके रहता है. ट्रिपल इक्वल टू यानी it will basically see whether both the variables are having same value or not. It is true. At the same time it will also see the data type. मतलब अगर b ऐसा है, डबल कोटेशन के अंदर 10 है और a में नंबर है, इसमें स्ट्रिंग है. अभी हम देख रहे हैं कि भाई a इज इक्वल टू बी. क्या होना चाहिए आंसर? ऑब्वियसली फॉल्स होना चाहिए, बिकॉज a के अंदर 10 है, दैट इज ट्रू. b के अंदर भी 10 है, बट दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इट इज नॉट अ नंबर. इन दैट केस यू विल गेट फॉल्स. सी, इट इज फॉल्स. बट अगर आपको डेटा टाइप से कोई लेना देना नहीं है, you just want to see whether both the variables are having same number or not, whether it is number or string, I don't care. I am just wanted to see whether both are having same value or not. In that case you can remove one equal to. Okay, ये ऑपरेटर यूज करो इक्वल टू वाला. तो ये क्या करेगा? डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, ये सीधा देखेगा कि दोनों में सेम वैल्यू है क्या. अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दिया. देखो.
Okay, even though both are having different data types, it has string, it has number, it is not checking the data type. It will only compare whether values are same or not. If same, it will return true like this. Okay, so interview question है, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल. ओके, वेरी कॉमन क्वेश्चन. अगर आप यूआई का इंटरव्यू दे रहे हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है जावास्क्रिप्ट में. ओके, सो यू शुड बी एबल टू आंसर. What is the difference now? If you are going to use double equal to, it means you can only compare, it will only compare the value, not data type. If you are going with triple equal to, it means it will compare the value as well as data type. Okay, now next है operator that is not equal. ये तीनों हो गए अभी. Let's discuss about greater than. Now let's say a has a 10 and b has a 20. Okay, and I'm checking like this, a is greater than b. Okay, a में क्या है, 10 है, b में 20 है. Obviously it is not true, right? It is false because a is not greater than b. False. Okay, then next है, let's say मैं उल्टा कर रहा हूँ अभी, a लेस देन b. ओके, a में b से छोटा वैल्यू है क्या? यस, दैट इज ट्रू. ओके, नाउ ऐसा भी कर सकते हैं कि 10, दोनों में 10 वैल्यू है. अभी क्या रिटर्न आएगा, a में b से छोटा वैल्यू है क्या? नो, इट इज हैविंग सेम वैल्यू, सो दैट्स व्हाई फॉल्स. या फिर मैंने उल्टा किया, a इज ग्रेटर देन b. a में जो b से बड़ा वैल्यू है क्या? नो, बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम वैल्यू, so you can use equal to operator here. So it will first of all check, अगर a में b से बड़ा वैल्यू है then true, otherwise a में b में जो वैल्यू है और a में जो वैल्यू है दोनों सेम होनी चाहिए. दोनों सेम है, so in this case it will return true. Okay, if you are going with less than or equal to, then दोनों a is not less than b but a is equal to b, it will return true. Okay, so these operators are checking the value whether it has max value or equals value. This will be checked whether it has less value or equals value. This will check whether it has less value. This will check whether it has greater value than current number. Okay, so these many operators you can use for the comparison operators. Okay, now how you can combine these comparison operators together with the help of logical operators. जैसे कि पहला है a has 10, b has 20. Okay, so I want to check a should be greater than b. Okay, अगर ऐसा नहीं है then a should have the even number. A modulus 2 equal to 0. ओके, एक कंडीशन है. ये कंडीशन क्या करता है कि जो a नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेगा और चेक करेगा कि भाई उसका रिमाइंडर 0 है क्या. इट मीन्स इट शुड बी इवन नंबर. अभी कंडीशन क्या है, देखो दो कंडीशन मुझे चेक करना है, लॉजिकल और का टेबल देखना है. ओके, पहला कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन b. ओके, a अगर b से बड़ा है तो ट्रू दो. पहली कंडीशन ट्रू है क्या इस केस में? नहीं, इट इज फॉल्स. a इज नॉट ग्रेटर देन b. तो अगर फॉल्स है तो 32 नंबर की लाइन देखो. ओके, पहली कंडीशन फॉल्स है मतलब 0 आ गया. अभी वो क्या करेगा, दूसरा कंडीशन चेक करेगा, a इज इवन नंबर. मैं बोलूंगा यस इट इज इवन नंबर, इट मीन्स इट इज 32 नंबर की जो लाइन है वो सेटिस्फाइड होगी. ओके, मतलब पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन ट्रू. आउटपुट क्या होना चाहिए? 1. 1 यानी ट्रू. ओके, लेट्स रिफ्रेश. या इट इज ट्रू. ओके, ए बी से बड़ा नहीं है लेकिन ए इवन नंबर है, ट्रू. अगर मैंने ये एंड कर दिया, लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड मतलब यहाँ पे आ जाओ. पहली कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स. 24 नंबर की लाइन देखो. दूसरी कंडीशन क्या है, ए इज इवन नंबर, ट्रू. मतलब 24 नंबर की लाइन है. आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा. क्यों फॉल्स आएगा? चेक करो, रिफ्रेश करो. फॉल्स आया. व्हाई फॉल्स? बिकॉज लॉजिकल एंड needs and requires both the condition true then only for true. Okay, यहाँ पे पहला कंडीशन फॉल्स था, दूसरा कंडीशन ट्रू था, इसलिए उसने फॉल्स दिया. अगर आप लॉजिकल एंड यूज कर रहे हो, इन दैट केस it should have both the condition true then only it will return true as output. Okay, got it? How to use this truth table in the source code? Whenever you will write the code, how to use that?
It is very straightforward. If you are working with multiple conditions, okay, and if you are using logical and or logical or, just ensure you know this truth table. Okay, अगर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू, सॉरी पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, इट विल रिटर्न ट्रू इफ यू आर गोइंग विथ लॉजिकल और. अगर आप लॉजिकल एंड यूज कर रहे हो तो पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, इट विल रिटर्न फॉल्स. वी जस्ट सॉ दैट. ओके, अगर आपको ये कंडीशन समझ में नहीं रही, अपन दूसरा कंडीशन लेंगे कि भाई ए शुड बी ग्रेटर देन बी एंड ए शुड बी लेस देन 50. अभी बताओ, आई एम यूजिंग एंड. ओके, पहली कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स. ए इज लेस देन 50, 10 है ए में, दैट इज ट्रू. तो मतलब 24 नंबर की कंडीशन अभी एग्जीक्यूट होने वाली है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स. रिफ्रेश करो, यस इट इज फॉल्स. ओके, अभी ट्राई करते हैं दोनों कंडीशन ट्रू करने का, तो वो ट्रू देगा. पहली कंडीशन ले लो, ए शुड बी लेस देन बी. ओके, एंड ए शुड बी लेस देन 50. बी में क्या है, 20. ओके, ए 20 से छोटा है क्या, यस ट्रू, मतलब ये पहला कंडीशन. ए 50 से छोटा है क्या, यस ट्रू, मतलब ये 1 भी हो गया, ये भी 1 हो गया. तो रिटर्न क्या आएगा अपने को, अभी 1 आना चाहिए, मतलब ट्रू आना चाहिए. लेट्स रिफ्रेश. आर यूजिंग एंड, यस. ए इज लेस देन बी, यस ट्रू. ए इज लेस देन 50, ट्रू. It should return true because you haven't saved the file first. Save the file, go here, refresh it, you can see it is true. So this is how you can use logical and. अभी सेम कंडीशन और में करते हैं अपन. ओके, और क्या 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 कहना है, पहला कंडीशन ट्रू है क्या, ए इज लेस देन बी, यस इट इज ट्रू, मतलब ये 30 लाइन पे ध्यान दो. ओके, दूसरा कंडीशन ट्रू है क्या, ए लेस देन 50, यस इट इज ट्रू. अगर दोनों ट्रू है तो क्या आउटपुट आएगा, ट्रू आएगा. लेट्स रिफ्रेश, इट इज ट्रू. ओके, और में दोनों कंडीशन जब फॉल्स रहेंगी, जैसे कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी एंड ए शुड बी ग्रेटर देन 50. अभी इस केस में दोनों कंडीशन फॉल्स है. देखो, ए में 10 वैल्यू है, बी से बड़ा है क्या, हो नहीं, फॉल्स. एंड ए इज ग्रेटर देन 50, नो इट हैज 10. सो अगर दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे देखो, और में दोनों अगर फॉल्स है तो आउटपुट शुड बी फॉल्स. तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे क्या आया, false. So this is how you can combine logical operators with the comparison operators. And while doing that, if you know the logical truth tables for and and or, you can build any kind of conditions. You can write any kind of code. Okay, I hope you got the understanding. Let me stop the recording.